हमारे पास ये स्टार्टिंग मोल्स हैं और ये हमारे पास लेफ्ट ओवर मोल्स हैं, ठीक है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कितने मोल्स एक्चुअली कंज्यूम हुए हैं, क्या मोल्स का चेंज है? सो दैट वुड बी एक्चुअली 1 minus 0.6, that would be 0.4 moles that changed. Is that correct? What do you say? So Yes. let's write moles that reacted 0.4 moles. So that's how I obtain 0.4 moles. Now, thing is, भाई जितने भी moles P के react कर रहे हैं according to the equation, उसके twice as many are reacting for Q, right? So if P is 1, Q is 2 times P. Do you get this part? That's given in the equation. So if I say P का जो चेंज है, पी का जो मोल्स कंज्यूम हो गया, दैट्स 0.4. सो फॉर क्यू इट शुड बी 0.4 टाइम्स 2. You get this? Yes. That means if for Q I started off with 1 moles, and for Q the change is 0.8 moles, which is 0.4 times 2. That's going to be 0.8. Okay. So at equilibrium, how many moles of Q am I expecting? So basically at equilibrium, I am expecting 1 minus 0.8. That's going to be 0.2 moles, right? Which is left. We get this? Yes. Are you sure? Yes. Nice. Similarly, अब पूरा रेशियो प्रोपोर्शन से हम काम कर सकते हैं. तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम अगर हमारे पास है, फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, 0.6 पी के इक्विलिब्रियम है, क्यू के 0.2 है. तो आप किसी भी रेशियो से आप आर और एस को फिगर आउट कर सकते हो. अगर मैं पी इन कंपैरिजन टू आर और एस देखूं, तो पी और आर और एस का रेशियो इज 1:1. दैट मीन्स फॉर एवरी 1 मोल ऑफ पी आई कैन हैव 1 मोल ऑफ आर एंड 1 मोल ऑफ एस. तो इफ आई से 0.4 कंज्यूम हुए थे, तो इसके 0.4 ही बने होंगे. क्या ख्याल है? और इसके भी 0.4 बने होंगे. और अगर मैं इस रेशियो से जाता हूँ 0.8 के रेशियो से जाता हूँ, ये भी काम कर सकते हैं. अगर हम Q के परस्पेक्टिव से देखें, तो Q का हाफ एज मच एज R बना होगा और Q का हाफ एज मच एज S बना होगा. तो अगर ये 0.8 था, तो स्टिल ये 0.4 ही बना होगा, बिकॉज हाफ ऑफ 0.8 इज 0.4 और S भी हाफ ऑफ Q ही बना होगा, तो दैट इज 0.4. डू यू गेट दिस? But I'm waiting for your response. Cut off. I can't hear you. Sir, you cut off. What was the question? No, I just asked you, do you get this? Why have I written 0.4 moles in R and 0.4 moles in this? You get this part? Yes. Because That's those were initially reacted. so that's 0.4 moles obviously at equilibrium, क्योंकि initially 0 था. तो अब 0 plus 0.4 करेंगे तो equilibrium में 0.4 ही बचेगा, right? Now these are moles. If we want to find out concentration, we have to divide moles with what? Volume. So we have volume, that's 1. So 0.6 over 1, 0.2 over 1, 0.4 over 1, 0.4 over 1, which is basically going to be 0.6, 0.2, 0.4, and 0.4, right? So now we just have to plug in these values here and they're going to get my Kc. So let's do it. zero point 0.4, I'm not writing 0.4 twice, I'm just writing 0.4 squared. And I'm doing 0.6 and I'm doing 0.2 squared. ठीक है. सो क्या आंसर आ रहा है? मेरे पास केसी का आंसर आता है 6.67. और यूनिट्स क्या होंगे इसके? तो कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा मोल्स इनवर्स डीएम क्यूब. ये बताइए बात समझी? Hello. Sir, you keep cutting off. So I don't have any internet issue at my I end. think
Yeah. So I think what you something missed? What you missed? with your last part for the calculations of like 0.6, 0.2 and stuff. So yeah, I just you know Concentration. plugged in these values. I just plugged in these Mhm. values in here, Sorry. and I got my answer as 6.67. And then I simplified it for units. That's moles inverse dmq. Okay. Do you understand it? Are you sure? Yes. So learning is कि first we have to figure out हमेशा कोई भी at your level of AS ऐसा कभी भी क्वेश्चन नहीं होएगा कि उसने हमें इतनी इंफॉर्मेशन ना दी हुई हो कि करना क्या है। तो बेसिकली एक रिएक्टेंट कंप्लीटली नोन होगा या एक प्रोडक्ट कंप्लीटली नोन होगा, then you have to proceed with what comes next, right next in your questions. So I think we can proceed. So ये यहाँ सॉल्व हुआ हुआ होगा, तो मैंने ये सब समझाया हुआ भी है, तो we have the answer, doesn't matter. Let's try this. So now would you be able to try this question by your own or shall I be solving it? I think I can do this question. You want to try it? Yeah. Yeah, I'll wait. Go ahead. Are there any like Yeah, so the information that is provided here is basically using the terms which you are already familiar with. So ethanoic acid is basically going to be this thing, right? That's ethanoic acid, right? Is that correct? So there is no response. High ethanoic acid is this. It's not that. COOH was carboxylic group, right? That was the acid. And OH was an alcohol, right? So that's ethanol. When equilibrium is reached, it is found that now the information is ajib si. 2/3 of the acid has reacted. So ajib matlab तंग करने का शौक है. 2/3 of the acid has reacted. That is it. चलो शुक्र है उन्होंने हमें कुछ तो इन्फॉर्मेशन दी है कि उन्होंने ये बताने की तो कोशिश की है कि इफ वी हैव CH3COOH और इनिशियली इसका 1 मोल था, so let's do I, that's initial, और then we have alcohol. अच्छा मैं इसको थोड़ा सा कंडेंस करके लिख रहा हूँ. CH3CH2OH is the same thing as C2H5OH, ठीक है, and it is basically again the same thing. CH3CO2 ये एस्टर बन गया हमारा, CH2CH3 and that's पानी, ठीक है. Okay, so this is 1 mole and what happens next? इसका भी 1 मोल उन्होंने दे दिया मुझे. Do you see this piece of information in the question? Initially ये zero होगा, ये भी zero होगा, right? Now let's move ahead. What happened? The happening has been जब इक्विलिब्रियम हो गया तो हमें ये पता चला कि इक्विलिब्रियम पर इतना मोल्स ऑफ एसिड, इतना नहीं, इतना एसिड रिएक्ट कर चुका है इक्विलिब्रियम पर, इतना एसिड रिएक्ट कर चुका है. दैट मीन्स द चेंज, इक्विलिब्रियम पर इतना एसिड रिएक्ट कर चुका है. दैट मीन्स द चेंज इज गोइंग टू बी 2/3 of whatever the value we initially assumed or whatever the value we initially had. So 2/3 has changed, right? So what is left at yes. equilibrium? What is left at equilibrium? So initially 1 था, 2/3 change हो चुका है. तो basically 1/3 ही बचा होगा ना इक्विलिब्रियम पे, क्या ख्याल है? Yes. So now all of these are thankfully 1:1 का रेशो, 1:1, 1:1. तो अगर ये 1/3 है तो भाई ये भी 1/3 चाहिए. क्यों? क्योंकि भाई ये 2/3 था, तो इसका भी उतना ही प्रोपोर्शन यूज हुआ होगा ना, राइट? They'll all be 1/3. या एग्जैक्टली, दैट्स नाइस. लेकिन दे वोंट ऑल बी 1/3, ये दोनों 1/3 होंगे. Well, those will be 2/3. या सो यू हैव टू प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप Okay. ताकि यू डोंट क्रिएट एनी कंफ्यूजन. तो अब अगर हम ये कहते हैं कि इसके 2/3 मोल्स जो हैं वो कंज्यूम हुए, तो ऑब्वियस है इसके 2/3 मोल्स बने होंगे, इसके भी 2/3 मोल्स बने होंगे. तो 0 + 2/3 2/3 2/3.
right? We get this. So now you just have to plug in the values. इसमें बस वो वर्किंग करते हुए एक एहतियात करनी है कि when once we plug it in Kc वाला expression, we have to put moles per unit volume. So we can assume let V is the volume, V is the volume. So we can just do V volume करके कर लो. तो products भी 2/3 हैं और reactants भी 2/3 नहीं, reactants 1/3 हैं. तो अब आप बड़े आराम से काम कर सकते हो. सारे 3 कैंसिल हो जाएंगे. Answer would be 4. Yes. Do you get it? Are you sure? Yes, I get it. तो आप कॉलेज से बेहतर हालात हैं या कॉलेज वाले ही हालात हैं जैसे वहां पे समझ में आ रहा था, उससे कुछ फर्क पड़ा है या You cut off. क्या? You cut off. आवाज नहीं आ रही. अब आ रही है आवाज? Yes. तो मैं ये कह रहा था कि कॉलेज वाले ही हालात हैं या उससे कुछ बेहतर हुए हैं? बेहतर हुआ. Yeah, comparatively better. चलो लेट्स ट्राई दिस. इसमें आई कैन हेल्प यू विथ क्या क्या चीजें हमारे पास है. सो इट सेज 2.6 moles of ethanoic acid. That's ethanoic acid. ठीक है. एंड दैट्स ईथन डायोल. एंड दैट्स, अच्छा उसने एस्टर ही बोल दिया. तो बोलना उसको कुछ चाहिए था, उसने बोला इसको एस्टर ही बोल दो. तो कौन बोले? उसने बोला कि इसको बोलो इथाइल इथानॉइड और छोड़ो उसको, बोला एस्टर बोल दो, दैट्स वाटर. तो अब आप देखो, यू वुड यू नो वुड यू एबल टू ट्राई दिस और शैल आई सॉल्व इट? I can try this. ओके श्योर. तो अम्मा बाबा हैं तुम्हारे आसपास? Uh, नहीं. नहीं तो तुम घर में नहीं हो, बाहर हो? नहीं, I'm at home, but we have like guests over अच्छा there. अच्छा अच्छा, ओके ओके. बिकॉज मुझे नहीं पता कि तुम कैसे पढ़ रहे हो क्योंकि आई कांट सी यू. तो अगर अम्मा अब्बा हैं तो मैं उनसे पूछ लेता कि ये पढ़ रही है या ये सेल फोन में लगी हुई है या ये बातें कर रही है या बस ऐसे ही बैठी हुई है, आई डोंट नो. नहीं नहीं, पढ़ रही.
I don't think I did it right. You're breaking. I don't think I did it right because my answer is 0.94. It doesn't make sense. How would you know that it does make sense? I feel like it's wrong. 0.9. How is 4 a sensible answer? So it never made sense either. So I'm okay with 0.94 doesn't making any sense, but your answer is 0.94. I think you messed up with some things. So let's see what you have done. So 2.6 moles initial ऐसे यहाँ कर लेते हैं initial change और equilibrium अच्छा नहीं काम करते हैं ना तुमने try करो मैंने सॉल्व किया हुआ है भाई पहले से so let's see how it goes. So initial moles of acetic acid is 2.6, right? Then they said mentioned clearly in the question K at equilibrium इसका 1.1 मोल बचा है. This is the piece of information in the question, right? ऐसा है. Yes. Yes. और इसके अलावा और कुछ भी नहीं था. कुछ भी और गिवन नहीं था. नहीं ये भी गिवन था सॉरी 1.6 मोल्स इसका भी गिवन था. This was given, this was given and this was given, right? Hmm. अच्छा if we see the equation तो इसके बाद काफी हद तक काम हमारे लिए आसान हो जाता है. तो अगर उन्होंने हमें ये कहा है फॉर एग्जाम्पल एस्टर 1.1 बना है, ठीक है, तो बेसिकली जो एस्टर का और इसका मोल रेशो है वो 1:1 है इक्वेशन में, राइट? और इसका 1:2 है. तो अगर इसका 1.1 बना है तो इसका 1.1 कंज्यूम हुआ होगा और इसका 2.2 बना होगा. Hmm. यहाँ तक सही किया. I just forgot the concentration at equilibrium part. Okay, so you substituted these values instead of the ones below them. Yes. So you got it now. You don't want me to explain it? But like, when do we cancel it out? Or like, that's what I'm not able to understand. Sorry, come again. Like, well, the last equation that we did, or like the last question that we did, was when we canceled it out now. Yeah. Yes, But exactly. then how do you know when to do that and when not to do that? You're asking me about the units? I I don't know how to explain it. किस नहीं, लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन. किस चीज को कैंसिल किया था हमने यहाँ? Like the volume. We didn't really. Hey, we did with the volume. Never mind. Never mind. अच्छा you get it now, right? Yes. So okay, let's try this. Let's try this. Once you do it, send me your answer on the WhatsApp. ठीक है? I need to see the working.
The equation for this one, since we have to find how many moles of like hydrogen, hydrogen and iodine uh, reacted, do we subtracted with x, like 1 minus x? So Vanya, are you trying it? Yes. अच्छा
Can you explain this one to me? I feel like I don't quite understand it. Vanya, just give me 2 minutes, okay? Okay. Yeah, I'm so sorry, Vanya, I kept waiting. वो एक कॉल आ गई थी और वो बच्चा थोड़ा सा परेशान ज्यादा था, तो मैंने कहा चलो इसको देख लेते हैं. अच्छा, यू आर स्टक एट हियर, राइट? आर यू विद अस राइट नाउ? Yes. अच्छा, तो क्या करना है, क्वेश्चन इज करना क्या है? सो द क्वेश्चन इज, Yeah. उसमें बोला अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड फाइंड आउट करना है. ठीक है. अ, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना. तो यूजुअल
देखते हैं क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है। तो क्या गिवन है भाई, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ आयोडीन, ठीक है, दैट्स दे आर हीटेड, ये नील है, राइट। तो अब हमें नहीं पता कि कितने मोल्स ने रिएक्शन किया क्या नहीं किया। हमें ये बात पता है कि इक्विलिब्रियम रीच हो गया है बस, दैट इज इट। और केसी बता, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इनिशियल इज दिस, हमें चेंज नहीं पता, हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट से एक्स मोल्स इसके चेंज हुए। तो डेफिनेट है इसका और इसका रेशियो 1:1 है, तो इसके भी एक्स मोल्स ही चेंज हुए होंगे, ठीक है। लेकिन इसके फिर 2x बने होंगे, राइट। देख देख, तो इक्विलिब्रियम पर दिस शुड बी 1 - x, दिस शुड बी 1 - x, एंड दिस शुड बी 2x, राइट। तो अब प्लग इन कर देते हैं केसी में, दिस शुड बी 2x डिवाइडेड बाई 10। अब ये 10 क्यों आ गया, बिकॉज वॉल्यूम चाहिए, मैंने मोल्स निकाले हैं, स्क्वायर्ड ओवर 1 - x/10 एंड 1 - x/10। डू यू गेट इट? Yes. सो बेसिकली 10, 10 और 10 स्क्वायर्ड तो कैंसिल आउट। सही सही कर रही थी मैं। हाँ बिल्कुल। So Kc is 49, okay? And this is going to be 2x squared over 1 minus x squared. So अब आप इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मैथमेटिकल हो जाता है, तो लेट्स टेक टेक स्क्वायर रूट। So we can take square root. So this becomes you know 49, and this becomes 2x over 1 minus x. इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, so ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। Square root of 49 होता है 7, so that's 2x over 1 minus x. So we can bring it here. So this becomes 7 into 1 minus x is equals to 2x. This becomes 7 minus 7x is equals to 2x. Or this becomes 7 is equals to 9x. Or x is equals to 7 by 9, which is 0.78 moles per liter. So I know now x. So I think मुझे आंसर मिल चुका है ऑलमोस्ट। बस अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अब मुझे फाइंड आउट करना है कि किसके मोल्स फाइंड आउट करने थे, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, इसके मोल्स फाइंड आउट करने थे, ठीक है, सही है। तो एक्स मिला है बेसिकली, इक्विलिब्रियम पर हाइड्रोजन आयोडाइड 2x है, so it should be 2 times 0.78, which is going to be 1.56 moles per liter। ये बताइए, बात समझ में आई? ये बताइए, बात समझ में आई? जी। Yeah, I get it. Are you sure? बेटा, are you sure you get it? Yes. Hmm. Then अच्छा, केपी पे फिर अभी नहीं जाते बिकॉज यू आर हैविंग चैलेंज इन केसी, तो पहले केसी के ही कुछ जो है ना वो, आई थिंक अब आप केसी के कुछ पास पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, या वो मैं आपके सामने स्क्रीन पे ले आओ, तो फिर कर क्या कहता हूँ, वट एवर यू से। I want to try to attempt few because like it's this topic that's bothering me the most. समझ नहीं आता। अब समझ में आया है? बेटा अब ये समझ में आया आपको? जी। मेरे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे तो सही, लेकिन P1 क्वेश्चंस करना पहले ही इसमें
It's very difficult. Uh, yes, Manya, let's try this question. We have to do part one, part two. Let's see क्या होता है. ठीक है? I'll attempt these. I solved the first two parts. First part or first or second both? Both. First and second both parts. So can you share your answer with me on WhatsApp Um, or you, whatever you think? for the first one, it's concentration bracket SO3 square upon SO2 square and O2. नहीं समझ में आया. मुझे भेज दो इसकी पिक्चर या स्क्रीन पे लिख दो. I can write it on the screen. You can. Oh, I can. Can you see it? Yeah, I can see it very much. That is correct. सही है. ठीक है. There's 2SO2. There's 2 moles of SO2. There's 2. And there's
2.02 and This 0.02. That's your answer. is 2.02 and 0.02, ये इनकरेक्ट है. What I have is this as 0.02 moles and this as 1.01 mole. how? Do we not have to subtract it with 1.98? Hey, wait, okay. Okay. Wait. Hey, I don't get how those answers were obtained. It's a no problem. So basically what happens here is कि हमने जो equation बनाई है वो तो सही बनाई है कि we do realize the ratio proportion we are going to deal with here. Okay, that's 2 and that's 1. So initially 2 moles of SO2 and that's 2 moles initially, right? And that's 2 moles. Okay. And resulting equilibrium mixture contains this much moles of SO3. So that's if I do initial. So I have 2 and 2 and now nil. ठीक है, equilibrium का I have 1.98 here. So I need to see कि इसका कितना होगा. तो इक्विलिब्रियम पर इसका कितना होगा, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो अगर इसका 1.98 इक्विलिब्रियम पर है तो जो चेंज होगा वो होना चाहिए इसका सेम 1:1 के रेशो में, राइट. SO3 का और SO2 का. इज दैट करेक्ट? SO2 में there it says अच्छा okay. बिकॉज 2:2 है ना, तो इसका तो रेशो सेम होगा. तो 1.98 अगर इसका चेंज हुआ तो इसका भी 1.98 चेंज होगा. दैट मीन्स 2 इसका माइनस 1.98 इज गोइंग टू गिव मी 0.02. okay मैंने और यहाँ इसका लिखा. और इसका होगा हाफ एज मच क्योंकि half as much. ऑक्सीजन इज 1. 1.98 डिवाइडेड बाई 2 जो भी आ रहा है, क्या आ रहा है, 1.98 डिवाइडेड. Okay. So this one. तो दैट इज 0.99. ठीक है. सो 0.99 अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर इज 1.01. डी गेट इट? Yes. Like अच्छा.
लेट्स ट्राई दिस। आई थिंक केसी तो निकाल लोगे, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। For the reactants and the product, why have to divide it by 40 dm cube पहले? वो तो जब हम केसी निकालेंगे तब हमें डिवाइड करना पड़ेगा ना। It's like, The moles we had, you have to divide all of them by 40, I whether वो yeah, okay. SO2 के, whether वो O2 के हैं, whether वो SO3 के। सही है सही है। अच्छा, अब तुमने मुझे डाउट में डाल दिया। यू हैव टू नाउ सॉल्व दिस। अच्छा।
The answer that I'm getting is really long for some reason. which is, What number? so it's still falling into that कौन सी वाली कैटेगरी थी वो? It's Yeah, it's what is it? 32040. Come again. Sorry, three. Yeah. 9 3920 2 0 400. 0 0 1 2 3 4 5. I don't know why it's so lamba. अच्छा ओके सो आई थिंक यू जस्ट मेड अ स्लाइट कैलकुलेशन है आंसर मेरे पास भी लंबा ही आ रहा है लेट्स सी के क्या डिफरेंस है हमारे आंसर्स में के सी एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी एसओ थ्री स्क्वायर्ड over Hmm? SO2 squared into O2, right? Yes. SO3 is already given, so we don't have to actually do anything. 1.98 over 40 हो जाएगा, right? Hmm. Yes. Then we Then have SO2. SO2 we just figured out वो था 0.02 divided by 40 और ये था इसका स्क्वायर्ड हो जाएगा और ऑक्सीजन वाज आई थिंक 1.01 over 40. ठीक है सो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो 40 तो कैंसिल आउट हो जाएगा उसका तो कोई मसला ही नहीं है तो वी हैव yes. 1.98 स्क्वायर्ड ओवर 0.02 स्क्वायर्ड टाइम्स 1.01 इसको जब मैंने सॉल्व किया ना तो मैं आपको आंसर बताऊंगा 1.98 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 0.02 स्क्वायर्ड तो बड़ा है आंसर आएगा बिकॉज वो वैल्यू इतनी छोटी है तो नहीं ये तो 40 रहेगा One, ना यहाँ पे तो 40 रहेगा आई एम सो सॉरी ये मैं भूल गया या तो 1.98 wait one स्क्वायर्ड second. I think I made a calculation error. या Yeah, 388158. हाँ, that's what my answer is. So 388158 is 3.81234.5. So I was having this as my answer. That is correct. So that's absolutely fine. So Vanya, do you get it? Yes. Are you sure? वो बस calculation error थी, but I बिकॉज understand. नहीं इस देखो इस टॉपिक में दो तीन इश्यूज हैं पहला इशू ये है कि इस टॉपिक में व्हाट हैपेंस इज के हमें इक्वेशन सही से बनानी है उसके बाद फिर मैथ्स कम एट प्ले तो वेरी कॉशियस यू हैव टू बी वेरी कॉशियस ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है ना इसमें थोड़ा सा भी अपना जो है ना वो फोकस इधर उधर करें एंड देन यू एक्सपेक्ट कि आप सही सही कर लो दैट्स नॉट पॉसिबल तो आपको पूरा ध्यान से करना है क्योंकि इसमें फिर इंथैल्पी भी बीच में आ जाएगा 10 चीजें आ जाएंगी इसमें तो यू हैव टू टेक गुड केयर ऑफ वट एवर यूर थिंकिंग मैं P1 पे अभी नहीं जा रहा इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप थोड़ा इसमें और साउंड हो जाओ फिर मैं आपको P1 पे लेके जाऊंगा आई एम फाइंडिंग मोर क्वेश्चन ऑन P2 थोड़े से मुझे नजर आ जाए ना जरा लेट्स ट्राई दिस हाँ चलो ये करते हैं
So the answer you have is absolutely correct. I can do it now. Yeah. So this needs a lot of practice, I think. So अभी तो फिलहाल I think you get the idea of कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. That's Yes. fine. That's fine. That's great. अच्छा तो shall we end this? Yeah. Okay. So let's see you in the next class. Okay. Office. Yeah.